जिन्होंने भारत को न्यूक्लियर पावर बनाया। ये कहानी है भारत के महान साइंटिस्ट की, जिसने देश के खातिर नासा का ऑफर ठुकरा दिया, जिन्होंने एक के बाद एक देश के लिए इतने मिसाइल बनाए कि आज पूरी दुनिया उनको मिसाइल मैन के नाम से जानती है। इनके ही बनाए PSLV का कमाल है कि आज भारत 10 रुपए किलोमीटर के कम खर्चे में मंगल पर चला गया, और ये भी इनकी ही देन है कि 2017 में भारत ने एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और दुनिया में गजब का रिकॉर्ड बना दिया। और आज अमेरिका जैसा देश भी रॉकेट लॉन्च करने के लिए इंडिया की मदद मांगता है, और दुनिया भर के देशों को पछाड़कर मिसाइल पावर बनाने के मामले में भारत को 6वें नंबर पे लाने वाले भारत के महान साइंटिस्ट, जिनका जन्म दिवस स्विट्जरलैंड साइंस डे के नाम पे मनाता है, जिन्होंने पूरे दुनिया को दिखा दिया है कि भारत के पास भी साइंस की ताकत है। ऐसे दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ाने वाले भारत के जनवादी राष्ट्रपति, भारत के मिसाइल मैन, जिनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। System. One is primary education, secondary education, higher education. Okay. Now I am not much concerned with the secondary education, the higher education, but our primary education is very bad. That means the children of creativity up to age 17, the education should bring out the creativity of the children. That means the teacher has to be creative, the classroom has to be creative. In education there are three systems. One डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं क्योंकि इन्होंने भारत को पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग जैसी मिसाइलें दी हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे हिंदुस्तान के पहले मिसाइल मैन थे टीपू सुल्तान। ये बात है 16वीं शताब्दी की। साउथ में सबसे पहले एडवांस वेपन्स और इनकी ट्रेनिंग मैसूर के सुल्तान हैदर अली ने शुरू की थी। इसी दौर में इनके बेटे टीपू सुल्तान ने लोह की पाइप के टुकड़े से मिसाइल बनाई जो 2 किलोमीटर तक मार कर सकती थी। लेकिन ये मिसाइल युद्ध में कुछ खास काम आई नहीं, क्योंकि इसकी एक्सप्लोजिव पावर सिर्फ इतनी थी कि 1 या 2 सैनिक घायल हो सकते थे। अब आपके लिए एक सवाल, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कितने युद्ध लड़े? I just want to ask, is your hairstyle inspired by someone? What is the question? Is your hairstyle inspired by someone? No, it is. इस देश का असली हीरो तो एक ही था भाईजान, पूरी दुनिया में था इस देश की शान, गंगा से पवित्र था जिसका ईमान। When did it start? When did you have it? गीता और कुरान, कभी नहीं किया किसी धर्म का अपमान, आखिरी सांस तक कर गया इस देश के नाम। इस देश का असली When I was a 23 fellow, that I will become a pilot. Okay, I will become a pilot. So I studied aeronautical engineering. I went to Air Force for pilot. Okay. They did not select me, okay? Out of 10 fellows, I was the 10th fellow, a selected fellow. 9 seats only they had, I lost it, okay? But when I became the president, I became the supreme commander. Then I told the chief of the air staff, I want to learn flying. He said, I'm going to give you training. He trained me for 6 months. Then I flew Su-30. Message is, dream transforms into thoughts, thoughts result into action. So I want to know, who is a good teacher? Well, it's a good question. For example, when I was a 10-year boy in Rameshwaram Primary School, my science teacher was Sivasubramania Iyer. I was a 10-year boy, 5th class. When the teacher enters, we saw he radiates knowledge. And also he radiates purity of life. You know, the two quality I saw in my teacher. That radiates knowledge and radiates purity of life. You know, I worked with 2 prime ministers, okay? When I was a president, I had to work with Vajpayee ji and Manmohan Singh ji. Vajpayee ji, I have seen with him, half I worked, 50% with him in 5 years, 50% with Manmohan Singh ji. Now, Manmohan Singh is an expert in the field, in the finance. No doubt he is an expert in the field. So I value his judgment on the economy and all, and his suggestion to various issues, and that respect I have got for him. Whereas Vajpayee ji takes fast decisions, okay? Fast decisions. So this my mind says, these are 2 differences. I hope both are complementary.
देश के लिए इतने मिसाइल बनाए कि आज पूरी दुनिया उनको मिसाइल मैन के नाम से जानती है। इनके ही बनाए PSLV का कमाल है कि आज भारत 10 रुपए किलोमीटर के कम खर्चे में मंगल पर चला। एक ही था भाईजान जो पूरी दुनिया में था, इस देश की शान, गंगा से पवित्र था जिसका ईमान, एक साथ रखता था गीता और कुरान, कभी नहीं किया किसी धर्म का अपमान, आखिरी सांस तक कर गया इस देश के नाम। इस देश का असली When I was at 23 fellow, that I will become a pilot, okay? I will become a pilot. So I studied aeronautical engineering. I went to Air Force for pilot, okay? They did not select me, okay? Out of 10 fellows, I was the 10th fellow, a selected fellow. 9 seats only they had. I lost it, okay? But when I became the president, I became the supreme commander. Then I told the chief,